I have seen prelims में काफी सारे questions come from those boxes only. Okay, so they will ask you some random thing and all of us keep thinking कि कहाँ से रहे हैं. Mostly उस NCERT से कुछ questions तो definitely आते हैं. But they are asking things from even planet Earth. There's a documentary called Planet Earth. Started my day when you would write in the morning. When you write in the morning, it's a different sort of a experience. We have Waseem Ahmad Bhat with us right now. He has secured rank 7 in this year's examination. This was his third attempt. In first attempt, he secured rank 225 and he was in IRS. That was in 2020, CSE 2020. After that 1 year, he did not clear prelims. And then last year, he wrote mains and he has secured rank 7. His optional is Anthropology. And he has scored the highest marks in the optionals this year, 328 marks. And I think that's it. Background is engineering, civil engineering from NIT Srinagar. And I'll hand it over to Waseem, and we'll have a Q&A session after what he has to say, right? Good afternoon, everyone. Thank you, sir, for that introduction. I'm from Anthropology, Jammu and Kashmir. So I have done my B.Tech in Civil Engineering from NIT Srinagar. And I completed my B.Tech in 2019. After that, I came to Delhi, started preparing for UPSC, wrote CSE 2020, got a rank of 225, as I said. After the results were over, I was elated. I was like, okay, life set hai, matlab. So then I wrote prelims again after 5-10 days after the result. I thought, obviously I know everything because I got 225 in the first attempt. I wrote the prelims. I did not qualify the prelims. Okay. So after I saw the result, for 1 hour or 2 hours, I was very, very sad. I'm like, yaar, matlab, इज्जत नहीं रही अपनी नजरों में. हाँ. So then I thought कि चलो मतलब this is a blessing in disguise because I might not have gotten the same time if I would have done CSE 2021 also. I would only get 2 months for preparing for mains, but I wanted more time to properly. So this time I was thinking, so I have to get into top 70. So that was my goal, and I tried whatever I could in optional as well as GS. Last time in optional I had around 280 marks. This time I got around 328. So I will talk about all of that. So that's a brief introduction of what I did. So anytime if you have some question related to some particular thing that I say, you can always ask. Okay. Matlab, I might be AIR 7 and you guys may not say what you want to say. Point being that if before the result came on 24th, on 23rd, if I would have come here and I would have talked to you, you guys would be like, ye kaun aa gaya? Hai na? So what happens, our identity is connected to this one number, and then people will listen to you if you are AIR 7, AIR something. So treat me like a normal human being, just ask questions, whatever it is, anything. मतलब बिल्कुल stupid से question मैं बताऊंगा भी नहीं कौन सा वाला stupid है. So you just ask, I will answer every question. Okay, so हम majorly strategy के बारे में बात करेंगे. Firstly, I wanted to ask a question. How many of you have written CSE 2023 prelims? Nobody? Who is going to write the 24? Oh, nice. All of you are freshers, so I will talk like that only. So firstly, सबसे पहले we will talk about prelims. Have you completed the syllabus or you are in between? Okay, so prelims ka we know that there are 2 papers. One is GS1, another is CSAT. So okay, GS1, do you know what are the subjects that are included in GS1?
Can somebody tell me? So there are like 8 subjects generally, matlab 7 to 8 subjects, and each one of these subjects is definitely important. One is polity. So what I will do is I will talk about sources for all of these subjects, uh, and I will also tell you like if there are some tips and tricks or something like that to do prelims. So one is polity. So firstly, the polity everybody knows, no confusion about that. It is Lakshmikant. Matlab, as far as I have done it, I did it from here. You can also do it from here, or if you find some other source, do it from one source only. Then second is economics. Nobody knows what is the source. Even I don't know. But the thing is that if you look at the economics questions that are coming over years, I have not looked at this year's prelims paper, so I will not comment on that. But if you look generally, what happens is they usually ask conceptual questions from economics. So you have to be really very clear about what different terms in economics mean, from repo rate or whatever, matlab marginal utility or these sort of things. So to clear your concepts, there are 2-3 ways. One is to go to internet, search every concept. Definitely that is going to take time. You don't have that kind of time. Second is you read NCRTs. Two major NCRTs that I personally also saw, which was one was I think Indian economy. What? No, हाँ micro है, but there is also this one na Indian economic. हाँ, class 11 is macroeconomics. हाँ. So I did these two. Microeconomics, I will tell, if you have the time, go for it. If you don't have the time, leave it simply. Okay, because in this exam there has to be some sort of what is called as priority management. जैसे when you are a CEO of a company, you have to make priority कि आप मतलब आपको किसी से meet करना है. If he is the CEO of another company, you meet him, not a person who doesn't have, who won't add value to your, let's say, company. So similarly in UPSC, you have to do priority management. अगर कोई topic बहुत ही ज़्यादा peripheral है, तो उसका मतलब टाइम आप कम दीजिए उसको. डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबिलिटी. आई एम नॉट टेकिंग गारंटी दैट इट विल कम, बट यू स्टिल हैव टू मेक दैट choice that you are doing those things. Once you do these two things, read all the concepts, fine. Then you take budget and economic survey. Okay, take a summary, economic survey ki, take budget, and you can see the different things that are provided in the budget. See that if you understand those concepts. Now there are many concepts in budget and economic survey that are not there in NCRTs. Okay, just say there is one international investment position, something like that is there. I once saw it in economic survey. It was not there in NCRT. It was not there anywhere. So you go to internet, you search for those particular concepts. This will save your time. So you're doing the basic concepts from here. Rest of it you're doing from economic survey and budget. Also, you can do one thing which I have done after I did the exam, because I'm in IRS. So we were made to watch the speech of Finance Minister. So Honorable Finance Minister, when she spoke in the Parliament, when she like recited the whole budget, so we were made to listen to that, and it was really helpful, because what happens in that is you actually get to listen budget the first time when it's announced for the nation. और उसमें हर किसी sector के लिए they will talk about different initiatives. Those initiatives are also important, because sometimes in prelims they will ask you things like what is this scheme related to, and it will be given in the recent budget only, but many of us miss that thing. So if you can do that, please do that. So this is economics. Then there is geography. Now geography is a subject that is very clear cut source. That is NCRT. There are 4 NCRTs, I think 11th and 12th. NCERT. 4 NCRTs, 11th and 12th ki. You can do that. I also did GC Leong. I made notes out of it for topics like landforms, such topics, and there were some peripheral topics that also
I did from GC Leong. So you can combine these two. One is the NCRT, another is GC Leong. You can do that. Rest of it, what you do is you go to previous year questions. For all of these, I will tell you one other source more than this. Let us move on to the next one first. So there is polity, economy, geography, history. Yes. So for history, there are multiple sources for example, including R.S. Sharma for ancient history. Some people also read the new NCRTs. There is also Spectrum. You know, there are all these sources, but I will tell you my own source. My source was, I had some notes, my own notes. I read those, and I was done with it. Never read. I read Spectrum once. I didn't like it. I left it. So the point here being, if you have good classroom notes, if you feel that they are good enough in history or in any subject, and you don't want to read something like let us say Spectrum or something, are okay, you can take those notes and you can read those notes. It does not matter much. I did that. But if you are not like that, you can take a look at, there is Tamil Nadu NCRT also, SCERT. I think it's about ancient and medieval. It's a good book. I saw it, some of my friends were using it. I like it was fine. And for modern history, you can also see Spectrum, or you can see there's a book by Vipin Chandra sir. All of us know these things, hai na? I feel like I'm repeating the same thing over and over again, but the point is everybody knows this. There's no point of speaking this. I'm just trying to say that just stick to one source. Okay, many a times it happens with me also. I used to do this earlier. That एक सोर्स पढ़ लिया, यार ऐसा लग रहा है ना इससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, सो आई विल रीड अनदर सोर्स. देन अच्छा मतलब ठीक, अब इतने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नाउ 10% ऑफ द क्वेश्चंस आर लेफ्ट, आई विल रीड अनदर सोर्स. बट व्हाट यू आर एसेंशियली डूइंग बिकॉज ऑफ दैट इज you are looking at the previous year questions and you are making your sources according to that. और नेक्स्ट ईयर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्लाइटली डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली. तो आप क्या करोगे, मतलब नेक्स्ट ईयर एक नया सोर्स ले आओगे. सो ओवर टाइम इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. व्हाट इज गोइंग टू हेल्प इज यू हैव टू डेवलप द स्किल ऑफ आंसरिंग विदाउट नोइंग टू एन एक्सटेंट. ओके, जैसे इस साल देयर वाज अ क्वेश्चन की in I think modern history में there was a question that why were Indian rulers not able to defeat British in the wars even though they had more men, more arms and everything, something like that was the question. Now this is not a question that you will get in standard sources. I have not seen, at least matlab I have not seen directly somewhere it is written. But what you need to do is once you read some source, spectrum हो या कोई notes हो या कुछ, आप इतनी बार पढ़ोगे ना तो आपको you will develop something which is called as like reading between the lines. कि आपने कोई for example you read some war, let's say Anglo-Mysore war you read, so you understand over time why Tipu Sultan was not able to defeat them. Similarly you read Maratha, Anglo-Maratha war, why were they not able to defeat British. So आपके दिमाग में वो back of the mind मतलब खुद ही एक reasons दो तीन बन जाएंगे कि why they were not able to defeat British even though you haven't directly read that. So ऐसे मुझे लगता है कि मतलब if you stick to that one source, you read the chronology, you read the different wars and everything that you have to read, you will develop a sort of subconsciously you will develop those reasons. So it's better to stick to one source. Don't go after multiple sources. आपके teachers जो होंगे वो आपको बताएंगे definitely सारे sources. I don't know why I have to मतलब do this, but ठीक है, I am doing this. There is also geography we did, history we did. There is also science and technology, which is a very साइंस टेक. कहाँ से करते हैं ये साइंस टेक? मैं तो ऐसे मजाक में बोल देता हूँ कि डी है सबका आंसर, तो डी कर देना अगर कुछ पता ना हो. बट हाँ, सो बट सोर्सेज इसके, इफ यू हैव टू डू बेसिक साइंस, if somebody is from humanities does not understand science much, I understand you, I empathize with you, please do NCERT. अगर थोड़ी सी NCERT कर लोगे तो it will be fine. बाकी science is more about current affairs, about the technological changes that are happening currently. I will give you an example. इसमें मतलब बहुत टाइम ऐसे आता है कि बहुत नए नई चीज़ों के बारे में, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी,
it's a domain, artificial intelligence, it's a domain, robotics is a domain. So these sort of technological changes that are happening currently, ये पूछे जाते हैं. So what you need to do is take any magazine, your own coaching or some other coaching, whatever. Take any magazine where there is like science के बारे में current affairs, okay? So current affairs from a magazine, okay? So take that, read that before prelims. Do that thing once. You will understand that science is actually a thing that you can do. मतलब ऐसी एक चीज है कि जिसमें ना आपको उतनी भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट यू कैन स्टिल, इफ यू हैव सम इंटरेस्ट, यू कैन ऑल्सो वॉच सम यूट्यूब चैनल्स. देयर इज अ चैनल कॉल्ड कोल्ड फ्यूजन. यू कैन ऑल्सो वॉच सम डॉक्यूमेंट्रीज. I urge you to please watch these documentaries because I feel like the prelims is changing so much, so fast, that all of us are still feeding into us the same sort of material that we were feeding 10 years back. But they are asking things from even planet Earth. There's a documentary called Planet Earth. वो environment वाले portion में उन्होंने काफी पूछा था, last time भी पूछा था prelims. हाँ, so 1 hour में I will do a full reading, one full reading, and उसमें से because I'll be sure in like 30 to 35 questions. तो I will do those 30 to 35 questions. एक बार वो 35 questions हो गए, obviously second time तो नहीं पढ़ोगे. अगर आपने वो second time फिर से पढ़ लिया तो second time it will take more time. So in the second hour I will divide it into two parts. In the first half hour I will try to do another reading. Later on मैं बताऊंगा कि मतलब ये कितना सच हुआ. This is like an ideal thing. Okay, so do again a full reading and try to do those questions जहाँ पे आप almost 75% sure हो. Okay, you are almost 75% sure कि हाँ यही आंसर है. What does 75% sure mean? 3 options. 75% मतलब इसका ये मतलब दिस इज सब्जेक्टिव थिंग. आपको लग रहा है कि यार यही है, मतलब ऑलमोस्ट यही है, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर. सो डू दोज क्वेश्चंस. इफ दीज आर लाइक 30 क्वेश्चंस, हर किसी का अलग अलग होगा ऑब्वियसली, एंड एवरी पेपर विल हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस. कभी कभी आप 40 भी कर सकते हो, कभी आप 30 भी कर सकते हो इन द श्योर सेक्शन. एंड इन दिस 75% वाले श्योर जो है. Then the next half an hour I will do again a full reading. अब बाकी questions की full reading here means only those questions that are left. तो इसमें because these are like 60 questions है ना, 60 to 70 questions I have already done. Now I will do 20 questions के around. तो I will do like ये 50% वाले हैं, 50% sure. अब इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे लक का बहुत फैक्टर आ जाता है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस इज 50-50. आई हैव सीन दैट समटाइम्स आई टिक इट, इट्स लाइक हाँ सही हो गया, मतलब सारे ही सही हो गए. समटाइम्स आई टिक इट, सारे गलत हो गए. अब इसमें मैंने क्या किया इसको कम करने के लिए, दैट लक फैक्टर दैट आई वांटेड टू रिड्यूस, व्हाट आई डिड वाज when I wrote the test series for prelims, all of you guys will be writing the test series. After every test series I made this table. Okay, so I made 3 sections. One was the 100% sure, 25%, sorry 4 sections, 50% and 0%. अब 100% में what I would do is कि जो मैं exactly sure था I would mark कि ये वाले मैंने mark किए थे. Let us say I have marked like 30 questions here, whatever 30 questions here and 30 questions here, and this is 90, like 5 questions. 0% में भी tick मार दिया. तो okay, so when I would do this, then I would see answer से मैं देखता था कि इसमें से कितने सही हैं. Usually I would see that around 29 were okay. So one question I was sure of it was wrong. यहाँ पे I would see that I'm not exactly sure, but I think it was around something like 25. 5-6 questions तो गलत हो ही जाते. When it came to here, the things changed completely. यहाँ पे 17 गलत
12-13 बस सही, अगर वो भी हुए मतलब दैट वुड बी वेरी वेरी गुड लक। तो यहाँ पे ये होता था। सो मैंने सोचा यार प्रॉब्लम तो इसका है, सो हाउ टू इम्प्रूव दैट थिंग, हाउ टू इम्प्रूव योर गेसिंग कैपेबिलिटी। वो चीजें हैं, when you come to 50-50 there will be some 50-50 where you are inclined towards one option, you know that matlab maybe this is right, I feel like this is more right than the other one, and there will be some 50-50 where you have absolutely no idea कि मतलब दोनों सही हो सकते हैं, आपको दोनों करने हैं। ओके मतलब देर इज नो वे अराउंड इट, हैव टू लर्न ओवर टाइम। जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा कि आपका इंट्यूशन इतना डेवलप हो जाएगा, यू लुक एट द क्वेश्चन, यू विल गेट एन इंट्यूशन, गट फीलिंग, दिस इज राइट। आई फील लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट आल्सो वर्क्स। थिंक अबाउट ईच एंड एवरी ऑप्शन प्रॉपरली, बट डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंकिंग की वजह से आई हैव सीन दैट इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, दिस टाइम आई थॉट लास्ट टाइम मैं मतलब इकोनॉमिक्स अच्छे से कर दिया मैंने, एंड दिस टाइम आई एम लाइक टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, guys, I am the real economics master, you should ask me all the questions, I will tell you. I told them everything, they went and did everything, I did not do everything, whatever I did it was wrong, मतलब not whatever but some of the things that I did, and they were telling कि यार आपने तो ऐसे बताया था और हमने ऐसे कर दिया। So what happened was because I thought I knew too much economics, so I was overthinking, I was like ये भी हो सकता है, अब रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो वो भी हो सकता है। नो, देयर इज अ, दिस इज एन एग्जाम नॉट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इट्स एन एग्जाम फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट। तो आपको वो एक बेसिक लेवल पे सोचना है, उससे डीप नहीं जाना है, जितना जरूरी है उतना ही सोचिए, उससे ज्यादा सोचेंगे तो मिजरी क्रिएट होगी। उसके बाद ये 0% वाले, 0% वाले में मतलब 0% ही सही होते हैं मोस्टली। ओके, बट मैंने मुझे ऐसा लगा कि in 2020 what I did was I did 96 questions, there were like 6 questions where I was 0% sure। ओके, मैंने देखा इंट्यूशन जो भी आया टिक कर दिया, उसमें मैंने देखा एक दो क्वेश्चन सही हुए थे। ओके सो अब अगर दो क्वेश्चन सही होते हैं, इफ यू आर ऑलरेडी लाइक गुड एट डूइंग दीज 90, देन यू कैन गो फॉर 2-3 मोर। ओके, डोंट डू इट मोर देन दैट, बिकॉज एक बार आप मतलब अगर आपके 2-3 क्वेश्चंस और सही हो गए, दैट्स अ बिग थिंग, इवन इफ इट विल कवर फॉर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग में कितना है, इट्स जस्ट 1/3। So one question is covering 3 negative questions, है ना? So if you do 2 right questions and 3 wrong questions, it is still positive. But try to do these properly at least. ये वाले छोड़ के, I'm not recommending that. तो वो वाले करके, now the score you like you can target anything। अब तो मतलब target क्या ही बचा, अब 80 पे target आ गया है, but target 100, okay, 100 के around 100 to 105 is fine। बट अगेन वन लेसन दैट आई लर्न इन यूपीएससी इज, जो आपका आंसर की से पता चलता है ना आपको, रियल में इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। इन 2020 आई केम फ्रॉम प्रीलिम्स, I was happy that I did 96 questions, I saw the score, I checked an answer key, I got 140। okay, that's a huge score, I was elated। Then I saw that in the real answer I got 116 real result। I still don't know what that is all about, but one thing I can say that you have to allow for some 10 marks। If you are getting 105 in answer key, allow yourself to मतलब think that it is like 95-96। okay, so ऐसे करना, क्योंकि otherwise फिर मतलब पता नहीं क्या होने वाला है, but हाँ, that is one thing। So this is GS1। Now I will tell you another story which was about my CSAT thing। CSAT में ऐसा हुआ कि we usually ignore that, and I'm an engineer from NIT Srinagar, so I thought I know all of the CSAT things। So in the first attempt I went to write the CSAT, I wrote it, most of the maths questions were wrong, like the things that I did, but I passed because of English comprehension। पता है मतलब इस एग्जाम में टोटली उल्टा होता है, जो आप सोचते हो ना उससे बिल्कुल उल्टा होता है। सो व्हाई डिड आई पास बिकॉज ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, बिकॉज आई फील लाइक आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। सो ऐसे जनरली मेरा है, I have this thing that I read a lot of books, and because of that, that comprehension had developed। If that was not the case, I might not have done that 2 to 5, maybe not even this, because your journey can be very different। If you do it in the first attempt, you get a lot of confidence, in the second attempt you can do even better, in the third attempt you can do even better। So वो जो CSAT वाला फेज है, उसमें क्या इशू होता है,
in the first attempt after I wrote the prelims, I saw the 140 score. I was very happy. Told my mom that I did prelims. Okay, पहले से, और घर पे मिठाई भी स्टार्ट हो गई. अभी रिजल्ट तो आया ही नहीं है, की आई है अभी. मैं इनको बोल रहा हूँ यार मिठाई रोक दो. They're like नहीं नहीं खुशी की बात है. Suddenly after 1 hour I felt like there was another paper in the exam, CSAT. वो भी एक बार चेक कर लेता हूँ. अब घर पे ऑलरेडी मिठाई दे चुके हैं वो. दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग हाउ टू से. अब मैंने CSAT निकाला, मैंने चेक किया, आई गॉट 67. अब आप समझ सकते हो ना, मतलब ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है. अब मैं मम्मी को बहुत डर डर के फोन कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा मसला हो गया. कम आ रहे हैं CSAT में, लग रहा है ये नहीं हो पाएगा. तो शी वॉज वेरी सैड ऑल्सो. शी वॉज लाइक नहीं कोई बात नहीं. पेरेंट्स हैव दिस थिंग, they understand you. Okay, they understand you very deeply and they will never say कि मतलब अरे ये क्या हो गया, अरे भगवान. तो ऐसे वो कभी नहीं तुम्हारे सामने नहीं करेंगे. फोन कट गया रोने लगेंगे वो, बट तुम्हारे सामने नहीं करेंगे. दैट्स अ गुड. सो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं. तो आई कॉल्ड वन ऑफ माई मेंटोर्स एंड आई सेड कि सर ऐसे इशू हो गया. तो ही सेड कि काफी लोगों के साथ होता है. सर मतलब काफी लोगों के साथ होता है, बट मेरे साथ क्या क्यों हुआ, मैं तो इंजीनियर हूँ ये. तो ही सेड नहीं, आप एक बार काम करो कि आप यू चेक सम अदर की. CSAT में sometimes what happens when the keys come very like close to the exam, reading comprehension, some people they would say, मतलब हर किसी का सब्जेक्टिव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है. दे वुड से ये ऑप्शन सही है बट वो सही नहीं होगा. देन आई चेक सम अदर आंसर की एंड आई गॉट 90. नाउ आई एम फाइन. तो लेटर ऑन आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम 2 to 5 रैंक. तो वो जो सीन था उसकी वजह से मुझे पता चला कि व्हेनेवर आई एम गोइंग टू राइट दिस एग्जाम अगेन, आई विल राइट विद प्रॉपर प्रिपरेशन. अब उस टाइम मेरा CSAT का स्कोर 2020 में आई गॉट 90. ओके, इन 2020 आई प्रिपेयर्ड फॉर CSAT. आई एम लाइक इस बार CSAT प्रिपेयर करके जाऊंगा. सारे ट्रिक्स मैंने, एलिमिनेशन जो भी होगा. CSAT में आई सॉ दैट देयर आर 5-6 टॉपिक्स like broad heads. One head is, for example, the head of visibility tests. There is a general thing that they keep asking. Then there is calendar questions that they will ask. वो मुझे अभी तक समझ नहीं आता उस दिन मंडे है या संडे है जो भी. तो then they will have these rows and column questions. तो ऐसे वाले कुछ कुछ questions I prepared some tips and tricks for that. Was ready for CSAT. I'm like इस बार तो मतलब बढ़िया 100 से ज्यादा. Now this time I got 75. I don't know what is happening, okay, but I qualified. Maybe I would have gotten even lesser, okay. After this I feel like मेरे को बस English ही आती है, math नहीं आती मुझे. तो ये था, मतलब ये एक experience था. So I would say please do not ignore CSAT even if you are an engineer. Some of you must be from IIT also. IIT का मतलब अलग होता है ना कि यार मतलब IIT क्या है. Maths we have done such a tough sort of maths, engineering maths, and we read all those Lagrangian equations and this and that. This is not Lagrangian, this is UPSC. Lagrange का ठीक है, मतलब आप कर सकते हो, बट ये वाला बहुत डिफिकल्ट है. प्लीज डू इट प्रॉपरली. इसके लिए सिंपल ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए एक बार, लुक एट ऑल द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग. आई टोल्ड यू ना, कैलेंडर क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, मेक अ सॉर्ट ऑफ ब्रॉड फॉर्मेट की कैसे करना है कैलेंडर क्वेश्चन, कैसे रो एंड कॉलम क्वेश्चंस करने हैं. डू दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. एक बार आप वो डेवलप करोगे कि कैसे कैसे करना है, यू कैन गो एंड गेट 75, बट दैट वुड स्टिल बी ओके. हाँ, सो वो एक चीज होगी. देन सेकंड थिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ अस, इफ यू कम फ्रॉम अ रिमोट एरिया, you might, मतलब you haven't read that much, let us say not read out of your own syllabus. I also come from a remote area. तो ऐसा होता है कि if you have not read enough, then this reading comprehension is going to be very difficult for you, to be very honest. So please make a habit of reading. Please make a habit of seeing books that are outside probably UPSC. If you are reading novels, that is fine. If you're reading non-fiction, that is fine. But make a habit कि आप reading करो, so that आपका reading comprehension अच्छा हो. And second thing उसमें ये भी है कि see past year जो previous year questions हैं उनमें जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया है ना, आप एक बार वो देखो, यू विल सी दैट देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शंस. दे विल बी वेरी सिमिलर टू ईच अदर, सो प्लीज सी दैट. बाकी स्कोर का मत देखो, मतलब अब मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है. तो हाँ, तो डू दैट प्रॉपरली. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो who have failed in CSAT got good marks in GS1 130. So if you get 130 in GS1 then fail CSAT, it's the worst possible pain.
ओके, साइकोलॉजिकल पेन मतलब आपको लगेगा कि यार ये क्या, सो दैट यू डोंट वांट टू गो थ्रू, दैट इज फाइन. इज प्रीलिम्स फाइन? एनी क्वेश्चन अबाउट प्रीलिम्स? ओके, नाउ आई विल गो टू मेंस. You know, the name of different stages of this exam is an indicator of the level of preparation that you need. Prelims, it's a preliminary test. What does preliminary mean? It means before something, some big storm is coming, which is mains. Okay, mains is the main part of this examination, so you have to prepare properly for this. And mains may, I will say, prelims is unpredictable. Sometimes it might very well happen that some of us do not qualify prelims because the paper was so random. Some of us did qualify prelims even though they didn't have that sort of preparation. Okay, that can happen. But in mains, there is more or less, according to me, there is a major correlation between your own preparation and the marks you are going to get. Okay, so you should prepare properly for prelims. Ab prelims mein how many papers are there? There are 9 papers totally. Okay, so I will 3. So 9 papers mein there are 2 qualifying papers. One is the language paper. You will be doing Hindi or other regional languages. Mine was Urdu. Then there is the second paper of English. Okay, these are qualifying papers. यहाँ पे आपको 30-35% इसी के अराउंड मार्क्स लेके पास करना है. So I am going to start from language paper only. Because ये वाले जो पेरिफेरल चीजें मुझे लगता है काफी लोग ये मिस कर देते हैं. So if you are good at your own regional language, whatever you are writing in, then fine. If you're not good, again look at previous year questions. I also did the same. Okay, तो एक बार वो कीजिए. सी के कैसे आता है? there's an essay, there's a translation from regional language. जैसे mine was Urdu, so from Urdu to English, English to Urdu. Then there will be a précis writing where you have to reduce like 750 के around words they will be given. You have to write that in 200 words. Now what happens is कि वहाँ पे ये भी एक story है. वहाँ पे they are given in boxes. So boxes, exactly boxes 200 boxes हैं. 200 में आपको लिखना है 700 वर्ड्स हैं यहाँ से दिए हुए. When you start writing in boxes, आपका एक पैराग्राफ खत्म हो गया, boxes खत्म हो गए. So that should not happen. Practice that beforehand. Okay, बस that you can do it. It's not that difficult. Then there is English. Most of us can do it. It's not that difficult. If you can write essay, if you can write other papers, you can write English also. ज़्यादा difficult नहीं है. मैं 1.5 घंटे में इंग्लिश लिखा, सो गया, ड्रीम देखा, डर गया, जोर से चिल्ला दिया. This happened in exam this time. Okay, and the invigilator was like, it's okay, it's okay. तो ये एक होता है, it's fine. GS1. अब GS1 is about history, it's about geography, it's about society, isn't it? हाँ, so GS1 में this time I will tell you, I slightly changed my strategy for mains. Last time I did directly notes, I used to write papers. This time I had a different sort of strategy, which was, I saw Shubham Kumar sir's videos. So what he would do, sort of reverse engineer the exam. He would read model answers. Any test series you take, there are model answers for those test series that coaching centers provide. So he read model answers for I think 2-3 years. So what I did for all these, I will tell you specifically. For example, GS1 mein we have history, art and culture, then society, geography. So for all of these, all 4, I read model answers, nothing else. Okay, यहाँ पे मैंने अपने notes भी छोड़ दिए, बाकी सब भी छोड़ दिया this time, because I knew that I knew the basics. I just needed to see कि मतलब लिखना क्या है और कैसे है. तो मैंने 3 साल के model answers I saw for all of these 3 year. और last time when I heard Shubham Kumar sir talking about this model answer thing, I remember one question I had. ये कैसी प्रिपरेशन है? मतलब थोड़ा अलग सा नहीं है ये? You तो you read from books, we see the books, then we write the answers. यहाँ पे you're reading answers. How does it make sense? Because everything will be so jumbled. कहीं पे भी कोई question आ गया किसी भी topic से. But believe me, ये जो preparation है ना,
this was the thing that increased my marks a lot, बहुत ज़्यादा, मतलब I can say that with surety, because I would not have been able to read books because they are boring firstly, तो नींद तो आएगी मेरे को, and दूसरी चीज़ ये है कि they are not written in answer format. Your brain has to read everything from question answer format वे. दो तरीके हैं रीड करने के, एक है कि आप बस पढ़ते रहो, जैसे प्लेजर रीडिंग होती है, आप बस पढ़ते रहो, अच्छा इस बादशाह ने ये किया था, उसने इसको मारा था, इसने ये किया था, दैट्स वन वे. And then when it comes to answer writing, you are writing something else, you're not able to write that. But if you read in answer question answer format, it trains your brain to think in that way. तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, आपका मतलब ट्रिगर हो जाएगा वो वाला पार्ट ब्रेन का, एंड यू विल राइट गुड आंसर्स. सो इफ यू कैन डू दिस, बट इफ यू हैव सम अदर स्ट्रेटजी, देन आई कैन नॉट से एनीथिंग. इसके बाद दैट इज वन सोर्स आई वुड से. द सेकंड सोर्स आई सॉ टॉपर कॉपीज. सो आई वुड रीड टॉपर कॉपीज. मैं ऐसे करता था कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग GS1 प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, उसमें मैं 3 ईयर मॉडल आंसर्स पढ़ रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग द टॉपर कॉपीज के टॉपर्स लिखते कैसे हैं और क्या लिखते हैं. नाउ टॉपर्स का ये है कि every topper will have a different like answer format, or maybe they will have different sort of presentation, different content. You have to find your own topper. Okay, that means finding someone who you like, जिसके आंसर्स आपको अच्छे लगते हैं देख के. ओके, क्योंकि एंड यू थिंक यू कैन एमुलेट दैट सॉर्ट ऑफ अ मॉडल, तो वो एक बार आप देख लो तो यू कैन डू दैट कि ये दो चीजें जो करके you will become a very good answer writer, I am telling you. But this is the basis. Okay, मेरे हिसाब से once you do this, you will get good enough content for writing answers. But practice is also important. I always say that answer writing is both a science and an art. It's a science because it requires content, and my content comes from here. But it's an art because art cannot be learnt in one moment. It requires, अगर माइकल एंजेलो को तुम मतलब 1 मिनट में बोल दोगे कि तुमने पेंटिंग कैसे बनाई, वो कैसे बोलेगा? नहीं बोल सकता ना. A lot of people ask me कि सर राज क्या है? मैंने बोला सर राज कुछ नहीं है. बोला कुछ तो होगा. तो वो वाली जो चीज है, वो सेंस जो होता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ सीक्रेट, देयर इज नो सीक्रेट, इट्स जस्ट प्रैक्टिस. इफ यू प्रैक्टिस दिस आंसर राइटिंग एंड यू गेट दिस कंटेंट ओवर टाइम, आफ्टर 5-6 months, आई एम गोइंग टू से कि यू विल बी as good as any other topper, okay, in writing answers. And that is the basic thing you have to do for mains also. So do that. Then there is GS2. Mostly I have followed this model only for all of the GS2, for polity, for social justice, for everything else except one part, which was international relations. Now international relations mein what happens is questions might change every year based on what has happened in international whatever diplomatic relations. So मैंने क्या किया उसमें, मैं पिछले वाले questions इतने मतलब मुझे नहीं लगे कि model answers and all are that relevant. So what I did in that, I read the magazine. जो भी मेंस का मैगजीन होगा इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो आप पढ़ सकते हो, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस एंड सी द टॉपर कॉपीज कि वो कैसे लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में. देयर इज अ सेट फॉर्मेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस which is that, देखो international relations is about what? It's about diplomatic relations between two countries. Our country and let's say a country in Europe, France or Germany, we have relations in different sectors. We have economic relations, which includes trade and all. We have technological relations, which might include anything from artificial intelligence to robotics or whatever. We have defense relations also. We have some sort of like strategic relation. And तो ये सारी चीजें जो हैं, you should know more or less कि major countries के साथ हमारे कैसे relations हैं. Then second part comes, which is organizations. हमारा बड़ी organizations में क्या हमारा role रहा है, and can those organizations be reformed? For example, there's a popular question कि South Asia में there are multiple organizations like BIMSTEC, SARC वगैरह, और उनमें what has happened over time कि these are not like very good at conducting the diplomatic relations, it has been found. तो वहाँ पे constantly ऐसा होता है कि क्या reform आ सकता है, can BIMSTEC replace SARC, can SARC be the next new thing, और कैसे integrate करना है. तो ये वाली सारी चीजें you can learn from some class notes, basic होगा, and do the mains magazine. Okay. बाकी इसमें पॉलिटी है, उसके लिए मैंने मॉडल आंसर्स किए. इसमें सोशल जस्टिस है, उसके लिए मॉडल आंसर्स किए. GS2 इज मोर और लेस दैट ओनली, है ना.
Then there is GS3. I will tell you the scores also later on कि मेरा कैसे change हुआ. It will be very interesting to know actually कि मतलब बहुत ज़्यादा change होता है if you follow this pattern versus if you follow the normal pattern of reading and writing answers. तो GS3 में there is economics. Again, I did model answers. There is environment. Again, I did model answers. There is disaster. अब disaster में मैंने क्या किया कि मैंने दो चीजें की. One, I did my own notes. I had small notes for all the disasters. That's a basic thing that every one of you would be knowing once you read disaster. तो वो तो है. Then I saw model answers में there were some parts that were not covered. Like for example, what is the role of media in disaster management? What is the role of community in disaster management? Local government का क्या role है disaster management में? So those sort of things I did from model answers. So it was just like मैंने combine कर दिया इन दोनों को. That is disaster. Then there is another which is security. Security का ये है कि there's a set syllabus. अगर तुम देखोगे more or less same ये questions come every single year. Same questions मतलब. Cyber crime, cyber security, there is like left wing extremism, J&K, Northeast, all of these things are very relevant. So इसमें भी मैंने क्या किया, इसमें मैंने नोट्स ही किए बिकॉज आई फेल्ट लाइक यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा विच वाज दैट आई फेल्ट लाइक जनरली व्हेन GS3 टेस्ट सीरीज इज सेट अप, what happens in GS3 test series, mostly people who set those test series they focus on current affairs. So economics में they will ask कि currently ये हुआ बताओ ये क्या है, और security में they will ask that something they will ask मतलब जो current का part है. But in real exam, I analyzed from 2015. I wrote all the questions of GS3. I found out that it was only mostly it was static. They would ask food sector. They would ask basic questions like what is investment. They would ask questions about, as I said, disaster में. They would ask basic questions कि हाँ मतलब क्या है, what is that Sendai framework and how has India fulfilled that thing. तो ये सारी चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. If you want to do more current affairs, you can do that, but focus on this thing also. और एक बार previous year questions देख लेना. Okay. तो that is the thing. Then GS4. अब GS4 is ethics, slightly different paper than others. The difference in ethics paper is that it's a paper that everyone writes like individually एक हिसाब से. दूसरी चीजें आप mechanically देख सकते हो, आप कर सकते हो, but ethics का ये है कि you develop your own writing skill because every question will be different. Sometimes you may not even understand whether to write in points or paragraphs. बहुत ज्यादा लिख के भी एक बार मतलब मैंने ethics paper लिखा ना तो कुछ और ही लिख दिया, मतलब completely different pattern, and I had like gained a good amount of skill this time, 6 months, and then I felt like यार what is happening, anytime I go to exam anything can happen in the exam. जो मैंने ethics का paper लिखा, it was CSE 2022, very lengthy paper, and all the case studies had the same answer. So be very well prepared for this paper. अब उसके लिए prepare करना, there are few things. One is that you have to have a very clear understanding of all the terms. Everybody would say this. I am also saying the same because that is the truth. So have a good understanding of all the terms that are given in ethics paper. जैसे for example, जैसे there is a term जो सब यूज करते हैं which is integrity. Basically जो foundational principles होते हैं civil services के, नोलान कमेटी उन्होंने जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो भी दिए हैं वो सारे प्रिंसिपल्स के यू शुड हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग. यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स दैट आर गिवन इन द सिलेबस. अब इसके लिए यूर क्लास नोट्स आई एम अगेन सेइंग बिकॉज यू आर क्लासरूम स्टूडेंट्स आई एम सपोजिंग, तो वहां पे जो आपको मिलेंगे गुड इनफ. If you feel that something else is also needed, you can also see. I think there are some books like Mudit Jain sirs and all those books, so you can see that if you need some term, and you can also search the internet. Okay, simple, search the internet. Then uske baad second thing that you need to do, which is you have to gather 2-3 things. One is examples of all those things. Okay, very important. Second is quotes. कोट्स एक बार आप गैदर करोगे ना आपको मजे आएंगे फिर लिखने में. मतलब ये भी कुछ भी आए तो कोट उसमें चाहे वो लगे वहां पे ना लगे आपको मजे आएंगे मतलब डालने में, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड. यू अंडरस्टैंड कि मतलब ह्यूमंस, वी एज ह्यूमंस वी हैव
वन इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, है ना। और अगर इंटीग्रिटी जो है वो हमारे कंपैशन के साथ भी इट्स रिलेटेड. So if you're writing about integrity, if you write about compassion also, na, that guy will understand कि it's about integrity only. I feel like मतलब everything is connected in ethics. Doesn't matter, कुछ quotes वोट्स याद कर लेना. And I will tell you personally, I have created this whole thing. Okay, this thing पूरा दोनों मैंने एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाया है. I will share that, okay, on my Telegram group. तो वहां पे मैं शेयर करूंगा. उसमें पूरा मैंने हर टर्म का डेफिनेशन लिखा है, हर टर्म के रिलेटेड जो एग्जांपल्स जो भी मुझे मिले अच्छे अच्छे, एंड आई रोट ऑल द कोट्स. सो दैट विल रियली हेल्प यू. इफ यू रीड दैट डॉक्यूमेंट यू विल सी कि मतलब हाँ ठीक है, उतना ही करना है. फिर बाकी तो ऑब्वियसली जो भी क्लास नोट से होगा तो वो चीजें रहेंगी. So ethics is this thing. And what I also did when I read the model answers for these 4 papers, as I said, for ethics I made this one document. For other GS I also made documents. I made GS 1 2 3 4. अब इनमें क्या किया मैंने, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाए, it is like this. I share all of those. It's so यहाँ पे मैंने लिखा है कि subject, then any sort of statistics, stats, then any sort of examples, quotes, or any report or any case of Supreme Court or something like that. अब GS1 में, for example, take the example of let us say what is the example? This is society, for example. If there's a particular topic like child labor, सबसे पहले I will also, हाँ, there will be another column which is that of definition. अगर किसी चीज की है, यहाँ पे I have written the definition by ILO. Okay. यहाँ पे I have written the statistics कि कितना child labor है, 10 million, और कुछ और statistics है, कैलाश सत्यार्थी से ने जब से काम किया है सर ने तो तब से कितना कम हुआ है, तो वो सब मैं यहाँ पे लिखा. Then I have written the reports कि जैसे मतलब what are the different schemes also government की, NC I think National Child Labor Rehabilitation Program, NCLRP, ऐसे for example है एक. There are different also committees and all, तो वो मैंने सारा लिखा है. You understand what this does? Every topic is actually, this is the validation, है ना. आप बेसिक तो पढ़ोगे नोट से या आप मॉडल आंसर से पढ़ोगे, एंड देन यू सी दिस थिंग, एंड इन एवरी आंसर वेन एवर यू राइट अबाउट चाइल्ड लेबर यू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स. एक बार आप ये करोगे ना, योर आंसर विल डेफिनेटली बी डिफरेंट देन अदर्स, है ना. वो एक चीज हो जाती है. मतलब इस बार इसमें इतना टाइम लगा इन डॉक्यूमेंट्स में. आई हैड टू राइट लैपटॉप, तो वो मैं टाइप करता रहता था ना, मतलब पता नहीं लाख वर्ड्स और जितने भी होंगे, बहुत टाइम लगा उसमें. मुझे लगा बीच में यार मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, इतना क्या कर रहा हूँ. बट देन आई हैड दिस थिंग कि इफ आई हैव टू इम्प्रूव देन दिस हैज टू बी डन, बिकॉज आई वांट टू राइट बेटर आंसर्स, आई वांट टू राइट विद स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल. तो इसकी वजह से काफी हेल्प हुआ. इफ यू लाइक दैट तो यू कैन सी, अगेन आई एम सेइंग, ऑन माय टेलीग्राम चैनल. हाँ, तो वहां पे आप देख सकते हो. सो दिस इज वन वे टू मेक लाइक वैल्यू एडेड नोट्स. Then there is, so this is majorly the mains GS part. Then there is another part of mains which is essay. Essay में why does UPSC want us to write essay? पता है क्यों? If you go to any Ivy League university, you have to write an essay about yourself. Why is that? Because essay actually shows कि तुम क्या हो. GS answers नहीं दिखाते वो. They can't show that because GS answers में ये है कि you have been given a question which is very specific. If you have the knowledge, you will write that question. You can even मतलब you have already copied from toppers or something like that. You can do that. In essay it becomes difficult because every year essay is different, है ना. ऐसा तो नहीं है कि अब repeat हो गया same essay, but how do you develop that? अब दो चीजें हैं essay के लिए. अच्छे essay लिखने के लिए I would say reading is very important. Firstly, reading मतलब आप थोड़ा मतलब हॉबी की तरह रीड कीजिए. यूपीएससी वाला रीडिंग तो आप कर ही रहे हैं, तो यू कैन रीड दोज थिंग्स. सो पहला सोर्स वुड बी रीडिंग फिक्शन और नॉन फिक्शन वट एवर है. वाई इज रीडिंग इंपॉर्टेंट? बिकॉज दो चीजों के लिए. वन, इफ यू रीडिंग मतलब जिस लैंग्वेज में आप ऐसे लिख रहे हो उसी लैंग्वेज में पढ़िएगा. ऐसा नहीं कि मतलब मैं अगर कश्मीरी हूं तो आई विल रीड इन कश्मीरी एंड राइट ऐसे इन इंग्लिश. इट विल नॉट हेल्प मी दैट मच. बट रीडिंग के दो फायदे हैं यहाँ पे ऐसे के लिए. वन इज दैट इट विल improve your language skills. Comprehension CSAT के लिए फायदा.
लैंग्वेज स्किल्स लिखने के फायदा फॉर ऐसे. एंड द सेकंड थिंग विच आई फील लाइक कि स्टोरीज, ए गुड ऐसे इज अ गुड स्टोरी. वहां पे मतलब स्टोरीज जितना आप ऐसे में डालोगे ना उतना अच्छा होगा. बिकॉज आई एम फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, आई कैन टेल यू दैट एवोल्यूशनरली ह्यूमंस हैव लाइक इवॉल्व टू हियर स्टोरीज. ओके, हमें सबको मतलब अच्छी स्टोरी अच्छी लगती है. और सेम फॉर ऐसे, अगर हम अच्छी स्टोरी इंट्रोडक्शन में लिखेंगे या अच्छी स्टोरी बॉडी में लिखेंगे तो द पर्सन हु इज चेकिंग दैट पेपर will really like that paper, I am telling you. On the other hand, if you're just writing facts, there's a thing that there was this conference, I don't know where it was, but उसमें ऐसा हुआ था कि there was some speaker who rose up to podium and he said कि इतने सारे बच्चे माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन इन ऑल की वजह से मतलब दे डाई अनफॉर्चुनेटली. एंड everybody was like okay fine, मतलब लगता है ना, not hit hard. Then he showed a picture of a small boy. He was dead on the beach. Once everybody saw that, वो मतलब रोने लगे. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? पहले तो ज्यादा थे, पहले में स्टैटिस्टिक्स ज्यादा थी, दूसरे में एक ही था. बिकॉज नाउ यू सी अ पर्सन हु हैज अ स्टोरी, एक छोटा सा बच्चा जो पता नहीं कहां से आया एंड देन ही डाइड. एंड वो जो स्टोरी है ना, आप उससे कनेक्ट करते हो, आप स्टैटिस्टिक्स से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते. ह्यूमंस हैव इवॉल्वड लाइक दैट. तो आप अच्छी स्टोरीज मतलब डेवलप कीजिए. read about Buddha, read about the great personalities, Mahatma Gandhi, read about Ambedkar साहब. तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, इनकी स्टोरीज पढ़ोगे, इनके स्ट्रगल्स देखोगे, दैट विल बी यूज्ड एवरीवेयर इन ऐसे. आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर ऐसे से कि आप इनको पढ़ो, आप जनरली भी पढ़ो, बट इट विल आल्सो हेल्प यू इन ऐसे. सो इसके दो फायदे हैं, आई टोल्ड यू. वन इज द लैंग्वेज एंड सेकेंड इज द स्टोरीज. I usually myself read a lot of books, तो वो मेरे लिए इशू नहीं था. But time I also tried to read Zen Buddhism की stories. Zen Buddhism is a very very different kind of philosophy that has small stories. They're called something, but small stories actually have a moral lesson. तो वो small stories जो होती है ना, हमेशा कहीं ना कहीं पे it will be helpful in introduction or body or conclusion of an essay. तो वो एक चीज आप कीजिएगा. दूसरा है obviously you have to practice. अब यहाँ पे there are two ways. You write a test series or you write a previous year essay. Same. If you can get it evaluated, very good. मतलब आपको comments मिलेंगे. But अब यहाँ पे ना एक चीज होती है, essay में काफी confusion है. In 2020 when I wrote the essay, I thought that I was good at writing essay. I wrote an essay, got it checked. तो वहां पे मेरे को they gave me 150. Good enough score. They said कि you are good. Okay, but there were some people who were getting like 140 or something in test series. So I was like, यार ये लिख क्या रहे हैं ऐसा जो इनको 140 मिल रहे हैं. But then I did not bother. I was like, okay. तो मैं जब एग्जाम में गया and I wrote the test, I got 140. Okay. Now why is that? Because I did not follow the mechanical model. I followed a very very organic model. जैसा मेरे को ठीक लगा मैंने वैसे लिखा. Okay, every one of us, we have that मतलब organic thing in us when we are like children. When we grow up, like society हमारे एक छोटे छोटे compartment में हमको बांट देती है, and they say कि this is the way you have to do things and this is the way you have. And similarly in UPSC obviously because it's such a tough exam, है ना. तो छोटे छोटे compartments में तो you have to write politically, socially, economically. Definitely in some essays you have to do that, but I feel like if you can write an organic essay and you feel that you are good enough, then good enough. Okay. But if you don't feel that you're confident of writing an essay, then follow that model. Find a good mentor, मतलब जो भी होगा essay में, तो उनसे आप एक बार मतलब डिस्कस कीजिए and write. If you are good in writing organic essays, I would say it's very good. If not, then follow those approach like जो भी structures होते हैं essay के. अब मेरा एक उसमें ये होगा कि मतलब one lesson I have said that essays should be such that in the introduction you are crying, in the body you are understanding, and by the end of the conclusion you have something to do. Okay, so पहले रो, फिर समझो और फिर खुश हो जाओ. So हाँ, so उसमें जैसे for example if there is an essay about say there is an essay, हाँ, this time there was an essay कि ships are safe in the harbor but that's not what they are meant for. ऐसा था ना कुछ. तो हाउ डू यू राइट एन ऐसे लाइक दैट, मतलब उसमें इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ होना चाहिए कि विच इज वेरी वेरी इमोशनली, विच लाइक पीपल कनेक्ट टू इमोशनली. मैंने उसमें जो फॉर एग्जांपल लिखा, आई डोंट नो इफ यू नो दैट गाय, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू
may not know that guy, but there's a person, Goggins. He, who knows? हाँ, very nice. So David Goggins, he's an African American, US में, one of the first Navy SEAL commandos. He was 400 pounds, okay, which means 200 kilograms, something like that. इतना मतलब बड़े बड़े थे वो तो. He worked in some restaurant, मतलब he used to clean there. So what happened was एक easy life थी उनकी. He was like a ship in the harbor, है ना, एक easy life. Then suddenly he started thinking that this is not what he is meant for. उसकी life में meaning नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. And he started to work out and started to try to get a different job. So ultimately सारा struggle करके he is one of the fittest persons you will see. He has run like ultra marathons, पता नहीं कितने सारे. And he is also one of the first SEAL commandos, Navy SEAL commandos from African American community. तो वो मतलब वैसा जो होता है ना, तुम समझ रहे हो, मतलब अभी डायरेक्टली शिप के बारे में तो है नहीं. आई डोंट नो जिसने भी ये बोला उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, बट आई नो कि इफ यू कैन कनेक्ट दैट थिंग थोड़ा इमोशनल करके, लिखना इमोशनल है. दिस स्टोरी माइट नॉट सीम इमोशनल टू यू. I wrote it, I know it's very emotional, okay, क्योंकि मेरे को खुद भी इमोशनल लगी. और I feel like those who have who read that, there's a way of writing emotional things. आप एक बार ना read there's a book inequality के बारे में. It's by Angus Deaton. Okay, Angus Deaton is an economist. उन्होंने एक बुक लिखी थी inequality के बारे में. I am not able to recall the name, but Angus Deaton का आप बुक सर्च कीजिए, जो उसमें इंट्रोडक्शन है about inequality. The way he has written that introduction, I think introduction should be like that. कि मतलब बहुत ही एक इमोशनल तरीके से एक फैक्चुअल चीज को बताना. चीज सेम होगी बट लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे, है ना. तो दैट इज लाइक दैट. वो इंट्रोडक्शन का मतलब वैसे कीजिए. और बॉडी में ट्राई टू लाइक लुक एट द टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. एक पर्सपेक्टिव ये है, आपको जरूरी नहीं है जो उन्होंने एग्जैक्टली बोला है ऐसे में वही लिखना है. जैसे लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम बीइंग ह्यूमन टू बीइंग ह्यूमेन, ये एक ऐसे था. एंड उसमें मैंने ये लिखा कि मतलब समटाइम्स इट मे नॉट बी अ लॉन्ग जर्नी. For some people, in a moment, they can change from human to human. Take Ashoka, for example. In a moment when he was in Kalinga War, after the Kalinga War, suddenly उनको realize हुआ, वो regret हुआ, and उनका जो मतलब अंदर का humanity था, वो actually उस time बाहर आया. So that was a very very short journey for him. But for other people like Hitler, it never happened. है ना, very very long journey, not even a journey. तो ऐसे ऐसे मतलब आप लिख सकते हो. It's not always possible to affirm everything that the essay is saying. तो बिल्कुल उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दैट इज द मेन्स पार्ट विदाउट ऑप्शनल. फर्स्ट चॉइस यू मेक इन 5 minutes, 7 minutes. देखो दो, you have to write 2 essays. This is essay. So what I did, I will tell you. हाँ. So this is essay 1, 5 to 8 minutes में. It will depend, है ना. कभी कभी मतलब this is not a rigid rule, but sometimes it might very well happen that you are not very sure even after, like I think एक बार मैंने ये भी किया कि हाँ, this happened in 2020. There was an essay which was about patriarchy. One of the essays was about patriarchy, and there was another one about social prosperity versus economic prosperity, something like that. So I started with social prosperity versus economic prosperity. 5 मिनट के लिए वो किया. उसके बाद suddenly I realized this will not happen. So I have to go to the other essay. So those choices you will have to make in the exam, but within this time, if you can do it, good enough. If you can even take 10 minutes, it's fine. But then you have to also see कि ये तो मतलब choice हो गई. उसके बाद you have to brainstorm, है ना. उसके बाद आपके पास 20 minutes बचेंगे, 20 to 22 minutes brainstorming. ना brainstorming जो है 2020 में मैंने कुछ भी नहीं किया. I got 140. दिस टाइम मैंने अच्छे से किया. I got 112. Okay, so you have to also understand that कि इस एग्जाम में काफी राज हैं, बट हाँ. सो ये जो है ना, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का, इसमें एक चीज आप बी वेरी क्लियर अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग व्हाट इट इज. इट्स अबाउट राइटिंग एवरीथिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड. ओके, पहले. एंड देन व्हेन यू राइट द एसे, यू राइट फ्रॉम दैट. मेरे साथ ये हुआ था, मतलब मेरे साथ ये होता था पहले कि आई एम लाइक दैट कि ऐसे उठाया लिख दिया. मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर दी ना, देन व्हाट विल हैपन इज कि आई विल राइट मतलब some peripheral things also, a lot of things that are not relevant, lot of things
that are not needed. तो वैसा होता था, तो पहली बार मैंने नहीं किया था, but this time I also understood कि brainstorming कैसे करनी है. So write all the ideas and make broad. जैसे for example brainstorming में मैं ऐसे करता था कि चलो ये इंट्रो हो गया, कि मतलब इंट्रो कितने हैं मेरे पास, 2-3 इंट्रो अगर आपके दिमाग में आते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, राइट दोस 2-3 पॉइंट्स. बॉडी में, whatever comes into your mind, related to that topic, not whatever comes into your mind randomly. मतलब गाना लिखने लग गए तो वो नहीं, but हाँ, whatever comes into your mind related to that topic, write that. और फिर एक उसके बाद जब आप वो लिखेंगे, आप कंक्लूजन का एक ब्रॉडली लिख दीजिए कि मतलब ये पॉइंट्स में लिखूंगा. जो ये इंट्रोडक्शन, सॉरी, बॉडी वाला पार्ट जो है, व्हाट यू डू इन दैट, यू आल्सो हैव टू सिस्टमटाइज कि व्हाट यू विल राइट फर्स्ट, देन व्हाट यू विल राइट सेकंड, ऐसे ऐसे, मतलब इस पेज पे क्या लिखेंगे उस पेज पे, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज द एसे विल लूज इट्स कोहेजन. ब्रेनस्टॉर्मिंग की वजह से समटाइम्स व्हाट पीपल डू इज देयर आर लॉट्स ऑफ आइडियाज, देन दे विल राइट एनी आइडिया एंड एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया, आफ्टर दैट देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन द पैराग्राफ्स. सो वो वाली चीजें बहुत ध्यान से, whenever you write one paragraph, you should make sure that the next paragraph is somewhat related to that thing. So how do you do that? Those things are a skill that you have to develop over time, but there are multiple ways. I would say there is also a blog by Anudeep Shetty sir, very nice blog about essay writing. You can see that blog, and you prepare some introductions beforehand, okay, before going to the exam, because I told you read books and all, तो वहां से stories मिलेंगी, तो prepare some introductions like महात्मा गांधी जी की कोई story होगी, या कोई भी मतलब ऐसे great people की कोई story होगी, तो वो introductions थोड़े से आप पहले से develop कीजिए. एंड बॉडी वगैरह के लिए obviously you just need to have stories, you don't know what the essay is going to be, तो वो तो बोल नहीं सकते. कंक्लूजन में most of the essays have a similar conclusion मेरे हिसाब से, which is that ultimately when these essays, जब ये essays जो भी topics होते हैं ना, उनमें ultimately you have to give a positive message कि there is some sort of a problem and we have to solve that problem. Let us say कि life is a long journey from being human to being humane again. तो उसमें जो ultimately जो conclusion होगा, what will that conclusion be? That we have to become human, है ना? So there is also a Kashmiri poet who said that, it's a Kashmiri poem, I don't want to say that, but I will say in English only, which is that I am human in shape and not in spirit. तो ऐसे उन्होंने बोला था, and he asks God to change him from human in shape only to human in spirit, which means humanity. So how do you gain humanity? Again, there are 2-3 ways only. One is the moral education, बचपन में, बचपन की, है ना? Because all of us are children at some point of time and we learn a lot of things in that time. Second thing is parenting, हमारी democratic parenting होनी चाहिए, ये दूसरी चीज हो गई. तीसरी चीज है रोल मॉडलिंग, ओके, रोल मॉडलिंग एंड एम्पैथाइजिंग विद अदर्स. तो ये जो 2-3 चीजें हैं ना, एजुकेशन, पेरेंटिंग, ये मतलब आप लिख के ले लो पहले से ही, प्रिपेयर अ प्रॉपर पैराग्राफ, राइट दैट इन एग्जाम डायरेक्टली. मतलब ये मोस्ट ऑफ द एसेज विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेट जहां पे एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन एंड पेरेंटिंग के बेसिस पे ही सब पूरी दुनिया चलती है, तो उसके बेसिस पे यू कैन राइट अ गुड इनफ conclusion. तो एक ऐसे में if this is possible then write that, but if the essay is, for example, let us say it's about this ship in the harbor versus वो, उसमें भी थोड़ा सा होगा but थोड़ा peripheral हो जाएगा. Write something that is relevant to essay, don't just follow what I am saying here. मतलब इस पे बहुत सारे जोक्स भी होते हैं ना, कि वो किसी ने बोल दिया कि ऐसे करना है and then the other person is exactly copying that and he is writing something very funny. तो वो नहीं होना चाहिए यूपीएससी में. यूपीएससी में फनी अलग हो जाएगा कि मतलब फेल हो गए, वो अलग फनी है. हाँ, सो ये है, तो 5-8 मिनट में आप कर सकते हैं. एंड देन द सेकंड, so this will be 20-22 minutes. Now already 30 minutes are gone. You have another 1.5 घंटा, no, you have another 1 hour to write essay. If you're good enough that you will write essay in 1 hour, then fine. If you're not good enough, then reduce this time brainstorming का. ओके, मतलब मैं ऐसे करता था कि मतलब 1 घंटे में मैं लिख लेता हूँ, फाइन. मैं 1.5 घंटे तक आई एम डन विद वन ऐसे, देन इन द नेक्स्ट 1.5 hour आई विल चूज फ्रॉम द नेक्स्ट ऐसे. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्ट्रेटजी एक्चुअली, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही 2 ऐसे चूज करते हैं, है ना? क्योंकि लेटर ऑन यू नेवर नो कि कितना टाइम लगेगा फर्स्ट ऐसे में. हाउ विल यू नो कि हाँ चूज क्या करना है? आई चूज द फर्स्ट ऐसे, आई राइट इट, देन आई एम लाइक शांत माइंड से आई विल चूज द सेकंड ऐसे. अदरवाइज अगर मैं 2 ऐसे पहले ही चूज कर रहा हूँ ना, it becomes difficult for me. So personally I did that. 1.5 घंटे के बाद I started choosing the next essay. I chose one of them. I wrote again with the same format.
So how to approach philosophical essays? So क्या है कि UPSC is only asking philosophical essays now. Philosophical essay का क्या मतलब है? Actually there is no such thing as philosophical essay, to be honest, but उसमें ये होता है कि they will give a statement, a very general statement which is not a social issue. It's just like an individual kind of thing or something related to philosophy. जैसे life is a long journey from being human to being humane. uh, the best time to repair a roof is when the sun is shining. ऐसे essays वो पूछते हैं आजकल. तो इन वाले essays में क्या होता है? Personally my opinion is these are the best essays that you can write. You may not be able to write social issues because social issues में क्या होता है ना कि everybody will write the same. सबको पता है कि मतलब if there is for example some particular issue of let's say women's issues, patriarchy के बारे में आया, everybody knows. और हम सोसाइटी में भी पढ़ते हैं, अच्छा खासा लिख लेते हैं उसमें. बट इफ दिस इज द थिंग फिलोसॉफिकल ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द सेम ऐसे. मेरा उसमें ओपिनियन ये है कि टेक दैट फिलोसॉफिकल ऐसे, मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग दैट यू हैव. कि जैसे अगर लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम बीइंग ह्यूमन टू बीइंग ह्यूमन, व्हाट आई डिड वाज आई रोट अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री से जो एग्जांपल्स थे, जैसे अशोका है फॉर एग्जांपल, कन्फ्यूशियस एंड ऑल दोस पीपल. देन मेडिवल हिस्ट्री से वी हैव अकबर एंड ऑल, है ना, तो उनका लिखा. देन मॉडर्न हिस्ट्री से वी हैव महात्मा गांधी जी, वी हैव हिटलर. तो ऑल ऑफ दीज पीपल एंड उनकी अलग अलग जर्नी है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन. मतलब हर किसी की ऐसी जर्नी तो होती है. तो यू राइट दोज थिंग्स, यू पुट एग्जाम्पल्स. सो आप क्या, मैं ऐसे प्रॉपरली बता देता हूँ एक बार ये. सो जैसे ऐसे होता है, यू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑन 1 पेज. ठीक है, मतलब मेरा ये है कि इंट्रोडक्शन 1 पेज पे लिखना है, बट इस टाइम मैंने 2 पेज पे लिख दिया, वो खत्म ही नहीं हो रहा था. तो 1 पेज पे आप वो लिखो, या 1.5 पेज पे 1.5. देन उसके बाद इन द नेक्स्ट पार्ट, हाँ, so in the next part what you do is, if it's a philosophical essay, write some understanding of that essay. कि जैसे life is a long journey from being human to being humane, and giving the same example over and over again. Okay, तो life is a long journey from being human to being humane, तो उसमें क्या है कि आप उसका एक understanding लिखिए कि what do you mean by that thing. Okay, what is human and what is humane. ठीक है, ये एक definition होगी. Human means what? It means the shape. Our shape is human. We are shaped like a human. We have evolved like a human being. But humane is what? It's about our mind, our spirit kind of thing. कि हम कैसा feel करते हैं. How do we look at others? Do we actually feel अंदर से we are human? It can be people, मतलब psychopaths, है ना? Human in shape, not humanity. उनके अंदर है ही नहीं. तो वो वाली चीज यहाँ पे आप पहले लिखोगे. Then you will elaborate with an example. Okay. This thing is important. This description wala part, it's very important. If you write only examples, one example, then second example, then second example, then third example, ऐसे वो ठीक नहीं रहता. You write one paragraph, then you write an example. आप किसी भी book में उठा के देख लो ना, this is the way people write. They will write a full description, then a small example to substantiate that point. Then similarly, you write a different perspective on that. If for some people it may be in a moment that they change from human to humane, है ना. Let's say for Ashoka, he was in Kalinga war, so he saw the blood soaked dead bodies and he suddenly changed, felt that he had lost his humanity, so he changed to a human form. तो वो एक लिख दोगे. Then third you will write कि कुछ लोगों के लिए बहुत लंबी जर्नी होती है ये. Take Akbar for example, considered as one of the great kings, but he still killed 30,000 people. One of the, मतलब as far as I know, he killed 30,000 people in one of the wars that happened in that time. Okay, तो मतलब उनके लिए ये ebb and flow में चलता था. Then there are some people for whom it does not happen. ऐसे लिखा मैंने description. Then I will write, for example, take Hitler. Never changed, है ना. Till the end of his life, he fought against, मतलब everything that was right in the world. तो उसका वो था. तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा description करके you give an example and then you conclude. Is that fine? So don't directly write examples, write a description. अब यहाँ पे आप directly obviously you will not be clear exactly कि लिखना क्या है, और वो कभी clear नहीं होगा जब तक आप practice नहीं करोगे. Once you practice 5-10 essays एक बार, मतलब before going to the exam, you will get an understanding and that will be an individual understanding हर किसी की कि कैसे लिखना है. मतलब मैं जब हर कोई नया ऐसे लिखता हूँ ना, एवरी टाइम आई फील लाइक यार मुझे नहीं आएगा. इवन इफ यू गिव मी एन ऐसे राइट नाउ, आई माइट फील लाइक कि यार इसमें लिखना क्या है, ये तो टोटली डिफरेंट. आई एम नॉट एबल टू राइट इट, आई विल नॉट बी एबल टू राइट इट. बट डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग थिंग. Once you do the brainstorming thing, you will understand कि मतलब you know a lot about that essay.
you can write a lot, you just have to organize that into an essay format. Fine. So now we will go to the optional. यहाँ पे मेरा बायस दिखेगा अब लाइक अगर आप मतलब बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज from that you will have a lot of incidents, so prepare them. You don't know if they will be used. I will give you an example. I prepared 25 introductions this time. Me and my friend, we prepared 25 introductions, and then we went to the exam. I wrote 2 introductions which were not from those 25. Okay, तो ऐसा होगा आपके साथ, but don't worry, मतलब you are still preparing, है ना. अगर लग गया तो लग गया, अगर नहीं लगा तो ठीक है, मतलब अपनी तरफ से तो मेहनत ही है. But conclusion के बारे में मैं ये बोल रहा था कि these conclude like education, parenting, critic parenting, and role modeling and all, ये वाली जो चीजें है ना, use these terms and use these small paragraphs at the end if it is relevant. I said that, है ना. सो मैंने बोला भी कि मतलब रिजिडिटी थोड़ी ज्यादा होनी नहीं चाहिए, बट यूज दैट इफ यू वांट टू डू दैट. इफ यू आर लाइक अ पर्सन हु कैन राइट वेरी ऑर्गेनिकली, हु डजंट नीड दीज थिंग्स, फाइन, मतलब राइट दैट. मेरा ये बस था कि यू हैव टू शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन कंक्लूजन, एंड इफ दैट कम्स थ्रू दिस थिंग, पेरेंटिंग, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, गांधी जी का कोट लिख लिया उसके बारे में, oh then fine, it will help you. If you don't want to do that, then it's also fine. This time when I wrote the essay, in one of the essays I think I wrote this thing of education and democratic parenting. In other essay it was not relevant. Let's say for an essay that the best time to repair a roof is when the sun is shining. It's not relevant to write matlab education and parenting, not relevant, है ना. मतलब why would I write that? It's a peripheral thing. I wrote only those things that were relevant in that conclusion, that you have to learn beforehand, but if this formula applies then do it. ऑर्गेनिक वे ऐसा होता है कि जब आप एक ऐसे पढ़ते हो, आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हो, कंक्लूजन पे पहुंचते हो, आपको पता नहीं चलता कि इसमें कोई बॉडी भी थी, कुछ भी था, मतलब ऐसा टाइप का ऐसे कि यू जस्ट रीड इट वन फ्लो, यू फील लाइक दिस वाज अ सिंगल थिंग दैट सम पर्सन हैड सेड अबाउट अ पर्टिकुलर idea. I will also share my essays that I feel I wrote organically. I don't know how many of you will feel, but वो वाले भी मैं share करूँगा. And in that essay you will also see कि it's not difficult to read organic essays. मतलब मैकेनिकल एसेज जो होते हैं ना, वो डिफिकल्ट हो जाते हैं. आप पॉलिटिकली पढ़ रहे हो, देन यू सडनली एंटरिंग सोशल, then suddenly you are into economic sphere. On the other hand, when you read organic essay, आपको ऐसा लगता है कि मतलब मजा आ गया, वैसा वाला फील. ओके, पूरा ऐसे पढ़ के आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, एंड इट इज इजी टू रीड ऑल्सो, इट्स नॉट डिफिकल्ट. तो वो वाला जो ऑर्गेनिक क्वालिटी होगा ना, ये एक प्रैक्टिस के साथ आता है, रीडिंग के साथ आता है. I think that is a lot of you would have that quality, but maybe you have not explored that quality. I would say कि definitely you try that in some essays. कि मतलब ऐसे politically economically मत लिखना, अपने हिसाब से जो आपको लग रहा है ना कि वैसे लिखूं, एक बार वैसा लिख के देखिए, आपके मेंटोर्स को दीजिए, उनको बताइए कि ऐसा है सही, कि do they want you to follow some other model. So that is essay. Fine. Optional. तो हाँ, ऑप्शनल यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी किस किस का है. हाँ देखो, ये हैं अपनी ग्रुप के. ओके, बहुत ही कम है. हाँ, सो बाकी PSIR, ओके, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री. ओके, तो मतलब डाइवर्स सेट ऑफ ऑप्शनल्स. अब ऑप्शनल के बारे में ऑब्वियसली आई कांट स्पीक इन एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑल, बिकॉज बहुत कम लोग दिखे मुझे यहाँ. तो आई विल स्पीक जनरली अबाउट कि हाउ टू चूज एन ऑप्शनल. maybe I don't know, you guys have already chosen your optionals. आपने जिस हिसाब से हाथ खड़े किए, मतलब most of you have already chosen optionals, but I nonetheless would say कि ऐसे करना. तो 1 2 3, ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल चूज करने में. वन इज द स्कोरिंग ability. So scoring ability, mostly people would say कि it is not necessary, but I feel like मतलब look at that, क्योंकि कुछ optionals में it has been a problem, you won't get a good score. So if you feel you won't get a good score in some optional, don't go with that. But second thing, जो interest है, this trumps everything else, because your interest will determine how much you read that optional, how much you actually like that optional. जैसे मेरे साथ था कि I chose anthropology only based on interest. I did not look at the scoring ability, but coincidentally it has a good scoring ability. Okay, मतलब anthropology में ठीक ठाक marks आ जाते हैं.
एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे यू विल ऑल्सो रीड सम अदर बुक्स आउटसाइड ऑफ probably syllabus itself और वो आपको हेल्प करेगा. तो do this and see the resources. हाँ, so some optionals do not have enough resources, so don't take those optionals if you do not have good resources. If you feel that you have good resources, then do that. यहाँ पे भी anthropology is good, PSIR is good, all these major optionals they are fine. Engineering optional किसी का कौन सा? Mechanical. Okay, मतलब उसमें होते हैं resources. होता है, ठीक है. Fine. मतलब I am also confused. Okay, then you have like test series and all. इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में थोड़ा कभी कभी टेस्ट सीरीज का इशू हो सकता है, बाकी फाइन. इफ यू हैव टेस्ट सीरीज, तो इफ यू हैव दीज थिंग्स देन टेक ए पर्टिकुलर ऑप्शनल, नो प्रॉब्लम. मतलब आप कोई भी ऑप्शनल, मोस्टली देयर वाज वन टॉपर फ्रॉम जियोलॉजी आल्सो, तो ऐसे ऐसे होंगे. तो मे बी यू आर दोज एक्सेप्शंस, दोज हु विल ब्रेक द बैरियर इन अ पर्टिकुलर ऑप्शनल. तो ठीक है, आप वो चूज कीजिए जिस हिसाब से आपको सही लगेगा. देन ऑप्शनल्स में देयर इज अ डिफरेंस विद जीएस. Two differences. One is that optional is honors level. Okay. अब जीएस भी ऑनर्स लेवल का हो गया है, पीएचडी लेवल का मतलब. बट ऑप्शनल में बोला गया है कि इट्स एन ऑनर्स लेवल थिंग. सो ऑनर्स लेवल का मतलब है यू हैव टू डू अ 4 ईयर कोर्स एटलीस्ट इन दैट थिंग. तो उतना डीप जितना एक वो स्टूडेंट होगा आपको तो उतना पढ़ना पड़ेगा. नाउ देयर आर 2-3 थिंग्स दैट आई से इन ऑप्शनल. सोर्सेज जनरल बता रहा हूँ. सो फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड बुक्स. यहाँ से मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाए. आई हैड सम क्लासरूम नोट्स आल्सो. तो वो मैंने एक नोट्स का बेसिक वो फाउंडेशन बनाया. सेकंड थिंग व्हाट आई डिड वाज आई डिड सम रिसर्च. दिस टाइम आई डिड इट मोर देन लास्ट टाइम. सो रिसर्च का क्या मतलब है, कोई भी टॉपिक उठा के देख लिया, यू सर्च द इंटरनेट and you see that if there's some particular research paper someone has written about it, some blog or जो भी मतलब जो भी होगा उसके related you see. अब research papers में these are huge, you don't have that kind of a time to do that kind of research. तो abstract पढ़ के भी आप ले सकते हो. मतलब यहाँ से आप 2-3 चीजें ले लेना, which was one is examples, case studies, ये especially sociology, anthropology and all के लिए, and pick the names of authors. If you see a person who is like adept at writing in a particular field, you will see that they keep quoting other people. जैसे Noam Chomsky, one of the most quoted like authors in the world. Michel Foucault, one of the most quoted authors. I think he's the most quoted author. तो लोग क्यों करते हैं दूसरे को quote? एक kind of appeal to authority है, मतलब कि वो अथॉरिटी है, उसने ये बोला है. तो वैसे ही आपको भी करना है. टेक नेम्स ऑफ ऑथर्स. इस बार मैंने बहुत सारे, मतलब इतने सारे नाम लिए थे कि हाँ, फिर लग रहा था कि बस लोगों के नाम ही याद कर रहा हूं मैं. तो वैसे आपको थोड़ा सा करना है कि रिमेंबर अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स, रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंकर्स, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट पोर्शन है. अब मतलब 300 क्रॉस नहीं होती ऑप्शनल में इफ यू डू नॉट प्रिपेयर वेल. पीपल हैव प्रिपेयर्ड रियली वेल, दे गेट 290. तो आई कैन टेल यू दिस हेल्प्ड मी अ लॉट. ये वाली चीज है. देन थर्ड थिंग इज अगेन topper copies or notes. I only did topper copies, not notes. I didn't see notes of anybody. I saw topper copies. अब copies में ये होता है कि they have written random questions, but you can see दो चीजें उससे. एक तो आंसर राइटिंग स्टाइल कैसा है, अगेन द सेम एज जीएस, उसी की तरह. बट यहाँ पे आपको एक और चीज भी मिलेगी. You will get a material also because they will have already done this research ना. They will have written some names. तो if they have written those names, you already take it from there, easy for you. 5-6 शीट्स उठा के A4 शीट्स उनमें लिख देना कि टॉपर कॉपीज से जो भी मटेरियल मिला है, टेक दैट. सो एंथ्रोपोलॉजी के लिए द स्टैंडर्ड बुक्स, देयर इज एम्बर एंड एम्बर. Read it broadly, okay, not necessary to read each and everything. There is genetics and all के लिए there is Pinath, okay, genetics and biological anthropology. There is Gaia and Upadhyay for thinkers. There is Nadeem Hasnan. देखो again I am writing only the names.
हाँ, so do this. मतलब नदीम हसन ने भी 2-3 बुक्स लिखी है for the paper 2. Do that. There's some material also. I think all that brain drain and all. See that. And अगर आपको टॉपर कॉपीज और नोट्स ठीक लग रहे हैं तो वहां से उठा के आप ये सारी चीजें आप कंबाइन करके एक नोट बनाइए हर किसी टॉपिक के लिए. इट विल बी फाइन. दिस इज रेलेवेंट फॉर एवरीवन, नॉट दैट पार्ट बट हाँ. तो ऑप्शनल्स में ऐसा है. एंड ऑप्शनल में आई वुड से आई वाज सेइंग दैट राइट टेस्ट सीरीज very thoroughly. Okay, last time I wrote only one test, I got 280 279. मतलब I still say 280, एक मार्क्स इंक्रीज कर देता हूँ, बट हाँ टू I got 279 उस टाइम. एंड my teacher told me that he was like you have the potential to get 320. तो if you would have done the test, because I only wrote one test और वो भी मतलब बिल्कुल मन के बगैर ऐसे लिख लिया. And this time I tried to write more. I wrote 30 tests for anthropology. And when I was writing the tests, I knew that this is the time I would get a good score. And if I don't get a good score, then nobody else will get a good score. So इस type का वो है. And when I wrote anthropology in real exam this time, I felt, मतलब only in anthropology I am honest. In GS I sometimes felt कि ये क्या लिख लिया. But in anthropology I felt कि these are good answers. This is the best I can do. तो वैसा मतलब we should all try to do our best. अब उसके बाद जो भी होगा, और आपका बेस्ट होपफुली कंट्री का बेस्ट होगा, मतलब यूपीएससी में. तो आप एक बार वो ट्राई कीजिए. ट्राई टू बी योर बेस्ट सेल्फ और राइट आंसर्स. डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. और एक चीज जो मैंने पहले नहीं बोली, विच वाज हाउ आई लाइक वुड वर्क एवरी डे. सो मेरा ये था कि टेक दिस एज लाइक माई डे. 8 घंटे सोता हूँ. ओके. हाँ, मतलब उससे कम नहीं मैं हमेशा. देन आई वुड वेक अप एट 8. कि बहुत लोग ऐसे पूछते हैं ना, सर आप क्या करते हो दिन में, मतलब आपने कितने घंटे पढ़ा. अब मैं बता रहा हूँ कि कितने घंटे पढ़ा, और फिर डर मत जाना. तो 8 आई वोक अप. only unfortunately only in 15 minutes I got ready to read. I don't know whatever I did. मतलब और 8:15 से 9 तक I would do जो मैंने पहले बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे. ओके. सो आई यूज्ड टू राइट एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब this started my day when you would write in the morning. When you write in the morning, it's a different sort of a experience. क्योंकि मॉर्निंग में यूजुअली पहले तो नींद आती है. देखो सुबह जब उठते हैं पहले नींद आती है, बीच में खाना खाते हैं उसके बाद नींद आती है, फिर शाम होती है तो नींद आती है. मतलब नींद ही नींद है हर साइड से. सो व्हाट यू नीड टू डू इज सुबह उठ के पहले आप क्वेश्चंस लिखेंगे. वंस यू राइट द क्वेश्चंस, ब्रेन इज फोर्स्ड टू राइट द आंसर्स. और अगर आप गंदा लिखते हो, गिल्ट होगा तो आप फिर भी पढ़ोगे. अच्छा लिखोगे तो अच्छा लगेगा, फिर भी पढ़ोगे. तो ये वाली जो ट्रिक है ना, ये ठीक है. मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिखोगे एंड इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि वही आता है ऑप्शनल्स में अगेन एंड अगेन. देन इन द फर्स्ट हाफ आई वुड डू एंथ्रोपोलॉजी. आई वुड रीड एंथ्रोपोलॉजी अच्छे से. मतलब नोट्स वगैरह पढ़ लिए जितना. उसका अलग प्लान आप एक बना लेना कि इस मंथ में इतना करना है, बट कीप इट, मतलब आई यूज्ड टू कीप इट इन दिस part only. Then like 1 to 1:30 ऐसे I would have some sort of like lunch. Then lunch के बाद I would sleep. Okay, sleep. तो मतलब नैप में थोड़ा सा ले लेता था बीच में. सी हो जाता है, मतलब इट्स ओके. फिर मैं 2 बजे तक, आई थिंक 2:30 वट एवर, 2 से मैं स्टार्ट करता था जीएस पढ़ना. इतने टाइम के लिए मतलब मैं होशियार हूँ. विदाउट नींद आई वुड रीड जीएस एक्सेप्ट फॉर द डिनर पार्ट, और प्रोबब्ली बीच में कुछ स्नैक्स वगैरह जो भी है. तो यहाँ पे मैं जीएस करता था और उसका अपना एक प्लान होता था. सो दिस वाज माय डे. बट ये एक आइडियल है. ओके. एवरी डे आई वुड वेक अप, आई वुड सी इट वाज ऑलरेडी 9. सो सो मेरा ये प्लान था कि 8:15 से मैं स्टार्ट करूंगा एंड देन आई वुड लाइक फील गिल्टी ऑल डे. एंड फिर मैं सोचता था, और मेरा ये है, आई हैव दिस पर्सनल थिंग, वंस आई रीच दिस टाइम लाइक 9, नाउ आई कैनॉट डू क्वेश्चंस. मतलब अब बस गिल्ट ही गिल्ट है. पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते. अगर क्वेश्चंस किए तो टाइम चला जाएगा. तो ऐसे. हाँ, सॉरी, आई फॉरगॉट वन थिंग, विच वाज 2 to 3. I would do 1 hour GS previous year questions. I would write every day. There is some investment, there is this and that. इन दो चीजों की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होता है. If you understand that, if you practice that, I am guaranteeing that you will increase your score by a large amount.
क्योंकि लास्ट टाइम आई हैड 355 इन जीएस, दिस टाइम आई हैव 431. Last time I had 280 in anthropology. This time I had 328. Okay, so ये वाली चीजें जो है ना, अंडरस्टैंड कि क्या पूछते हैं वो एग्जाम को. बाकी यू हैव टू ट्वीक दिस थिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीएस में आप कुछ दिनों के लिए, मैं दो पढ़ता हूँ हर दिन. आई यूज टू रीड 2 जीएस, either history, geography, polity, something, economics, because I get bored after some time. इतने टाइम के लिए नहीं पढ़ सकता. And after few days I would keep a test here. So यहाँ पे इस टाइम में ही टेस्ट. Similarly anthropology में इस टाइम में ही टेस्ट. तो if you can see this sort of a thing is not healthy for a human being. Okay, I have recently been reading a book called Work. The history of work from stone age to the age of robotics, and उसमें I came to know that जो hunter gatherers रहते हैं कालाहारी desert में, they're called San Bushman or Ju Huansi. So they work only 15 hours per week. Okay, UPSC students work 15 hours per day. तो मतलब ये जो stress होता है ना, ये बहुत difficult होता है. But believe me, once you do it, you will again have to work 15 hours a day. So don't worry, it's going to be your lifestyle. मतलब वो आदत हो जाएगी फिर later on. ये ऐसा ही job है कि जहाँ पे इतनी responsibility है कि you have to work. देखो, we have created a society, there's a state, and for that state bureaucracy is very important, civil services is important, they have to be there 24/7. उनके बगैर तो नहीं चल सकता. तो the bureaucracy will be filled by people like you who are preparing for this exam, है ना. So follow this sort of a timetable. Na time mile padho. And normally I am not saying this is for all the time you are preparing for UPSC. No, right now I would not say follow this thing. Follow this between prelims and mains. So newspaper and current affairs ka 2020 mein I used to read a lot of newspaper. Every day I would give it 1 or 1.5 hours every day. तो या तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़िए. और सेकंड थिंग आई वुड से, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस उस टाइम में ये नहीं करता था. ओके, सो आई वुड रीड हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इन वॉट एवर सुबह 1.5 hours के लिए. एंड आई वुड मेक नो नोट्स. आई डिड नॉट मेक एनी नोट्स. आई मेड नोट्स फॉर 1 year, देन आई थ्रू देम अवे. ओके, बिकॉज आई डिड नॉट रीड इट. मतलब नोट्स आप बनाते हो फॉर अगेन रिवाइजिंग, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट देन देयर इज नो पॉइंट. तो वो मैंने 1 साल के लिए किया, देन आई लेफ्ट इट. सो आई वुड say don't do that. Then second thing, you read monthly magazines आते. तो एक आप पूरे महीने के लिए you read the newspaper, then at the end you read a monthly magazine. It will connect things. And when you are close to the prelims, you read some sort of prelims magazine, जो भी होगा. When you are close to the mains, you read mains magazine. That was my strategy for 2020. Now this time what I did was, did not read a newspaper, did not see a monthly. Okay, but that is me, not you. तो मैं आपके लिए तो नहीं बोलूंगा. 1 साल के लिए do this thing very diligently. Once you qualify the exam in first attempt, whatever rank you get, then it is up to you whatever you want to do, because उस time पे you will already be confident enough and you will have known a lot of things. 1 साल के लिए क्यों important है? Because you need to know current affairs 1 साल का. अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, मतलब पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, बस आप वही बुक्स पढ़ रहे हो, then it will be difficult to qualify the exam in the first attempt. First attempt mein you have to be properly like current affairs based also. And the second or third attempt jab aap later on likho, if you have to write, God forbid, so then leave the newspaper. Okay, only read it for interview, no need to read it otherwise. Fine, मतलब monthly से आप कर लोगे. मैंने भी अपने फ्रेंड के साथ नोट्स शेयर किए थे. वी मेड द सेम नोट्स. एंड आई वुड से, अगर आप 2 लोग साथ में नोट्स बना रहे हो, वो एक पार्ट का बना रहे हैं, आप एक पार्ट के बना रहे हो, देन इट विल बी अ रियली इफेक्टिव स्ट्रेटजी. बट मेक श्योर दैट मतलब यू आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग द नोट्स, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं ना नोट्स बनाने के या शेयर करने के. ऐसा भी होता है. Do that. If you feel it's effective, then go forward with it. Problem. If you feel that you're okay, सिंगल आप नोट्स बना सकते हो, सिंगल आप पढ़ सकते हो, तो दैट इज ऑल्सो फाइन. कैसा होता है कि मैं ओवरकमिंग रिग्रेट, आई विल से जल्दी से, यहाँ पे रिग्रेट हुआ, तब 9 बजे में उठा, रिग्रेट हो गया. अब मैं यहाँ पे क्या सोचता था कि आई हैव द रेस्ट ऑफ डे विद मी. इफ आई डू एवरीथिंग, देन एट द एंड आई विल डू दिस पार्ट. ओके, okay, I would fool my mind like that, and when this time comes I am already asleep. Regret खत्म. तो that is the simple way. So what I would do, यहाँ पे मैं wake करता था, मतलब I don't know 8 बजे में उठता था. I think I would go to the coaching 9 से 12 खत्म.
बीच वाला टाइम इसमें कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ लेता था. देन इसके बाद आई वुड गो टू एंथ्रो कोचिंग. टाइम खत्म, वहां से आता था, नोट्स बनाता था फॉर एंथ्रो, टाइम खत्म, स्लीप. तो दैट वाज द सिंपल स्ट्रैटेजी. उस टाइम कुछ महीनों के लिए मैंने ये किया. देन कोविड हैपेंड एंड आई हैड टू वॉच ऑनलाइन एंड ऑल. तो थोड़ा सा ना आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, वो एग्जैक्टली रिजिडिटी तो नहीं है. एंड ऑब्वियसली राइट नाउ एट दिस स्टेज यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट. डू नॉट फॉलो दिस शेड्यूल बिकॉज दिस इज अ स्लाइटली डिफरेंट शेड्यूल. ये आगे जाके थोड़ा सा आप फॉलो कर सकते हो. क्लास में जो नोट्स पढ़ा, मतलब हमारे जो टीचर थे वो क्लास में ऐसे डिक्टेट कर देते थे सारा. 3 घंटे हम हाथ वाथ हमारे खराब हो गए. एंड मैं घर आके ना आई वाज सो एंथुजियास्टिक दैट आई टुक डिफरेंट A4 शीट्स, उन पे नोट्स बनाता था. एंड आई वुड कीप लाइक 4 सोर्सेज बिफोर मी. पीनाथ यहाँ पे पड़ी है, एम्बर यहाँ पे पड़ी है, लैपटॉप यहाँ पे खुला है. देन आई वुड रिसर्च फ्रॉम एवरीथिंग एंड पुट में नोट्स में. एंड इस टाइम मैंने जो देखा कि मतलब वो नोट्स दे वर वेरी गुड ऑल्सो, बट आई डिड नॉट गेट टाइम एनफ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर द होल एंथ्रोपोलॉजी. आई प्रिपेयर ओनली फॉर पेपर 1. सो इस टाइम मैंने पेपर 2 के लिए भी किया. सो वैसे ही करना है, लाइक यू हैव टू बिकम लाइक अ आई डोंट नो लाइक अ लॉयर और समथिंग. हाँ, मेरे हिसाब से मतलब मैंने ये किया उस टाइम. आई वुड आल्सो से कि वेट फॉर सम टाइम. इफ योर क्लास नोट्स आर फाइन एनफ, जो आप ऑप्शनल में बनाते हो, देन इट्स गुड एनफ. बट यू नीड टू आल्सो कीप वन थिंग इन माइंड, व्हिच इज क्लास में जो भी आपको पढ़ा रहे हैं घर जाके वो पढ़ना ही पढ़ना है. एंड रीड इट इवन मोर डीपली देन योर टीचर टेल्स यू. Okay, so that is fine. If you read all the NCRTs, I haven't read all the NCRTs, but if you read all the NCRTs, I would say half of the paper. Definitely, because rest of the paper would be more like कि मतलब इंटरनेट से या कहीं से इधर उधर से आ गया तो. हाँ, and the fight is, believe me, the fight is about that half of the paper. Because उसमें अगर आपने गलती कर दी ना, वहां पे कंपटीशन में से आप बाहर हो गए. हैव टू डू ऑल द, अभी प्रीलिम्स डिफिकल्ट हो गया है, बट डू ऑल द बेसिक स्टफ, स्टैटिक पार्ट जो भी आपका करना है, डू दैट प्रॉपर्ली सो दैट यू आर नॉट रॉन्ग इन दोज क्वेश्चंस. एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू whatever. मतलब internet and everything. Okay, fine. It was very nice meeting you all. Thank you. Thank you.